तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड वेब एग्जैक्टली है क्या चीज. ठीक है. So what exactly this world wide web is and how come this world wide web of this technology is taking the majority of the part of the internet. So as I was saying that the entire internet is not exactly the world wide web. It contains various other services like FTP, email, telnet, go for P2P chat, IM, etc. Okay, but yes, the majority stakeholder is world wide web. So what exactly the term world wide web means? Okay, so if we go to one of the prominent websites, which is the Java Tea Point, as per this Java Tea Point, the World Wide Web is defined as follows: like it is the repository or it is the information system. Okay, it is the information system which contains the information of all the websites that are hosted over the web. Okay, so दुनिया में जितनी भी websites है, सबकी information is World Wide Web में. Right, so we can say that World Wide Web is a collection of websites or web pages, okay, that are stored on the web servers. So what exactly are web servers? We'll be trying to understand that. I hope the definition of World Wide Web is clear to everyone कि World Wide Web exactly है क्या चीज. एक रिपोजिटरी, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मान लो जिसके पास सारे वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन है कि दुनिया में जितने भी वेबसाइट होस्टेड है सारे वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन जो है इस वर्ल्ड वाइड वेब के पास होने वाले. ओके, तो अभी बात अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वेब सर्वर इज. ओके, सी वी केम अक्रॉस द टर्म सर्वर इन द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. ओके, बट here there is a specific term which is added before the term server, that is web server. Okay, so what is a web server? Web server is a server. Okay, it is like the traditional server. The main task of the web server is to provide the service, that's it. But to be very specific, it will provide the services of the web. That means all the websites that are stored in a server and those servers responsible to serve the web pages that are stored in them are the web servers. Okay, so let us try to understand with a diagram so that we can get a better idea of what exactly web servers are. ठीक है, मान लेते हैं अपने पास सिस्टम है. Okay, so this system is basically the server. Okay, and this is the client. Okay, so here the client can be anything. I'm taking an example of PC. It can be a smartphone, it can be a tablet, it can be any device. Okay, so the moment we request a web page, request for a web page, okay, to the server, and the server responds and sends the web page to the browser. Okay, sends the web page to the browser. So this device or this system who is responsible to send the web page is basically the web server. इसे हम लोग कहते हैं web server because it is providing web services. So the reason why I'm saying it is providing web services because the websites are stored here. Okay, so it depends vendor to vendor that how many website should be stored in a server. Okay, since the server infrastructure is pretty huge and yes, they are scalable from both the perspective horizontal and vertical scale. They have the capability to scale in horizontal as well as vertical perspective. So what does the term horizontal scalability or vertical scalability means? So the term horizontal scalability or vertical scalability basically means to upgrade the system. Okay, upgrade the system either by adding more servers or by upgrading the existing system with hardware resources. Okay, I hope the term scalability is clear to all of you, as well as the term web server is clear to all of you, as well as the task of web server is clear to all of you. In case all these terms are clear, please type Y in the chat box. एक बार chat box में जो जल्दी से Y type कर लो फटाफट ताकि next concept पे हम लोग जा सके. Let us take the example of APS Gerard. Okay, so if you take the example of APS Gerard, you can see the moment I type APS Gerard, I get the website. Obviously, this website is not stored in a client system. Okay, this website is stored in a server system, right? So ये जो website है, ये website में जो दिख रहा है, ये किसी definitely किसी एक server में stored है, right? So the server which is storing the website is basically the web server. Okay, so the server which is storing the website is basically the web server. Okay, so there is a mechanism by which you can get the server details. Okay, server का IP कौन सा है, right? या फिर कौन सा सर्वर में ये स्टोर्ड है. ओके, किस टाइप का सर्वर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं मिलेगा बट यस हल्का फुल्का तुम्हें डिटेल जो है मिल सकता है. ओके, तो वेबसाइट होस्टिंग डिटेल्स. ठीक है, जैसे ही ये हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हमें मिल जाता है. ओके,
ये साइट चेकर प्रो, फिर digital.com की तरफ से, फिर hostingchecker.com की तरफ से। अब कैसे चेक करना एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें जो है यूआरएल टाइप करना होता है, यूआरएल को एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, मोमेंट वी पेस्ट इट एंड टैप ऑन द बटन फाइंड होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये hostingchecker.com, ठीक है। तो फिर तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा एग्जैक्टली कि ये जो होस्टर है, जो ये साइट को होस्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है। ओके, तो एज ऑफ नाउ इसके पास कोई डिटेल नहीं है, बट हुईज के पास जाएंगे, हुईज के पास जाके एक बार चेक करते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स फ्रॉम वेंडर टू वेंडर। ओके, हर कोई जो है चेक नहीं कर पाता, ठीक है, हर कोई चेक नहीं कर पाता, बट लेकिन सी दिस टूल इज एबल टू चेक, दैट इज digital.com। digital.com बता दे रहे सर्वर का आईपी ये है 49.50.68.33 एंड these are the name servers: ns1.apsjurat.org, ns2.apsjurat.org, and this is the hosting provider which is providing the hosting to this website, that is APS Jurat, that is Sai Future India Private Limited. Okay, so this was the details. So I hope you have an idea like how to get the details of a server. Do you want to ask anything? Yes, please ask. सर ये अभी हमने एपीएस जोराट का किया सर, अगर तो थोड़ा और रेप्यूटेड साइट का करेंगे तो दिखा देगा, लाइक फॉर एग्जांपल Amazon, फ्लिपकार्ट का। हाँ, yes, definitely it will show you. Okay, तो ये जो चीजें रहती है, दिस इज पब्लिक, दिस इज नॉट प्राइवेट। ऐसा नहीं कि ये प्राइवेट डिटेल्स है और ये शो कर दे रहा है समथिंग लाइक हैकिंग और वो, ठीक है। दिस आर पब्लिक मैंडेटरी डिस्क्लोजर। Okay, so this need to be disclosed. Okay, this need to be disclosed to www. That's why you're getting the details. Okay, this is not some sort of hacking. Okay, अगर हमें let's say Amazon का चेक करना है, let's say Amazon का एक बार चेक करके देखते हैं। Let me copy this URL and just paste it over here. Okay, let us search it. ये तो बहुत जल्दी इसका निकाल के दे देगा। See, you get the details. See, Amazon has multiple name servers. Like किसी ना किसी एक नेम सर्वर से ये काम करेगा। अगर कोई एक सर्वर डाउन होगा तो दूसरे सर्वर में पिंग करेगा, फिर से कोई एक सर्वर डाउन होगा तो किसी दूसरे सर्वर में पिंग करेगा। तो और जो कंपनी जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है वो है तुम्हारा अकामाई टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग ये देखो हुईस में जाके अगर हम लोग डिटेल में और ज्यादा चेक करें तो ये सारा जो है डिटेल तुम्हें प्रोवाइड हो जाएगा। ये हम लोग के एपीएस जुराट की वेबसाइट का है। ओके, ये सारा डिटेल्स तुम्हें जो है देखने को मिल रहा है। डोमेन रजिस्ट्री कब होगा, डोमेन रजिस्टर्ड कब हुआ था, और तुम देखो तो डोमेन खरीदा गया था 2013 को, यानी कि apsjurat.org का जो डोमेन है ये 2013 को खरीदा गया था। अब चेक करते हैं amazon.in का डोमेन कब खरीदा गया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हुईस रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे। तो हुईस रिकॉर्ड में जैसे क्लिक करते हैं तो हमें डोमेन का थोड़ा ज्यादा डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि डोमेन 25 कब किया गया था, उसके बाद एक्सपायरी कब होने वाला है, राइट। अब जनरली होता क्या है, अब जनरली होता ये है कि जो डोमेन नेम हंटर्स है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डोमेन कंटिन्यूअसली जो है डोमेन के एक्सपायरी के लिए रुके हुए रहते हैं। जो रेप्यूटेड डोमेन्स होते हैं, ठीक है, जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, उनके एक्सपायरी के लिए रुके हुए रहते हैं और जैसे ही एक्सपायरी होता है उसे खरीदने की कोशिश पे जो है लग जाते हैं, ठीक है। अब जो एग्जैक्टली रेप्यूटेड कंपनीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी द मोमेंट एक्सपायरी वो होता है, एक्सपायरी के ठीक 15-20 दिन पहले ही उसे रिन्यू करवा देते हैं ताकि उस रिस्क में ना आए। यस, और एक केस है और एक बात है कि डोमेन जब तक एक्सपायरी हो जाता है तुरंत एक्सपायरी के 15 डेज या फिर 20 डेज तक जो है डोमेन ट्रांसफर नहीं होता किसी और यूजर पे। So this is once again a security measure in order to protect the domain or in order to keep the exclusiveness of a domain to a particular user, ठीक है। तो तुरंत डोमेन ट्रांसफर एक बार रिपीट करना सर। कौन सा वाला पॉइंट? सर्वर ट्रांसफर करते हैं ना सर। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल मान लो ये सर्वर ट्रांसफर क्यों करते हैं सर, वही बोलना। सर्वर ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेन ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। हाँ सर वही, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मान लो ये डोमेन तुम्हारा 2005 में खरीदा हुआ है और इमेजिन कि डोमेन जो है इसी साल जो एक्सपायर हो रहा है, इसी साल लेट्स से कल को एक्सपायर हो रहा है और अपना विद्युत ज्योति को इस डोमेन के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे खरीदना ही है क्योंकि Amazon.in को खरीद लेगा तो डेफिनेटली Amazon से ज्यादा पैसे क्लेम कर सकेगा उस डोमेन को बेचने के लिए। ओके, वो अपने जो भी पैसा क्लेम करेगा तो आराम से जो है डोमेन को Amazon को मजबूरन उतना पैसा उसे देना पड़ेगा। बट द थिंग इज लाइक, हाँ यस, so what's the meaning of domain expiry? Domain expiry means, for example, the moment you purchase a domain, you purchase it for a limited period of time, ठीक है। ये जो apsjurat.org ये जो तुम्हें डोमेन नेम दिख रहा है ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी ने भी परचेस करके नहीं रखा है। एज आई सेड कि इंटरनेट किसी का भी नहीं है, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन आल्सो बी द ओनर ऑफ दिस apsjurat.org, बट हाउ कैन आई प्रिवेंट एवरीवन टू बिकम द ओनर ऑफ दिस apsjurat.org डोमेन नेम? So the standard protocol or the standard procedure to keep the exclusiveness of a domain is to renew the domain before time. Renew the domain before time
even if the domain got expired in due course of time, you will have 20 days of period. You will have a 20 days of period to renew that particular domain name. ओके यानी कि मान लो अगर लेट्स से आज का तारीख है तुम्हारा 13 जुलाई, 13 जुलाई को अगर डोमेन एक्सपायरी होता है तो मेरे पास आज 13 जुलाई से 20 दिन का टाइम है इस डोमेन को रिन्यू करवाने के लिए। अगर 20 दिन तक के अंदर भी मैंने रिन्यू नहीं करवाया तो ये डोमेन विल बी पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल, ठीक है, एंड एनीवन कैन बाय दिस डोमेन फ्रॉम दी सर्विस प्रोवाइडर्स। अब डोमेन कैसे खरीदते हैं? डोमेन खरीदने के लिए देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स, देयर आर मेनी सर्विस प्रोवाइडर, बट द सर्विस प्रोवाइडर व्हिच आई प्रेफर अ लॉट इज बेसिकली द नेम चिप, ठीक है। नेम चिप में जाके जो है तुम्हें बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है डोमेन नेम, इनफैक्ट सर्वर्स, किस तरीके के सर्वर्स तुम खरीदना चाहते हो तो तुम्हें लीज में मिल सकते हैं। ओके, सो हियर यू कैन रेंट ए सर्वर, ओके, हियर यू कैन होस्ट योर साइट, इवन हियर यू कैन बाय योर डोमेन नेम्स, ठीक है, एज वेल एज हियर यू कैन बाय योर एसएसएल्स फॉर योर वेबसाइट। अगर तुम्हारे अपने वेबसाइट के लिए तुम्हें एसएसएल खरीदना है, एसएसएल सर्टिफिकेशन लेना है, तो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट टू गेट, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई नीड टू गेट अ डोमेन, ओके, लेट्स से एपीएस जोराट, एपीएस जोराट से क्या क्या डोमेन मिलता है, लेट मी चेक, ठीक है। एपीएस जोराट से ऑलरेडी ओआरजी तो बुक्ड है, ओआरजी नहीं मिलने वाला, तो बट ओआरजी के अलावा और क्या क्या डोमेन नेम जो एपीएस जोराट से मुझे मिल सकता है, तो यू कैन सी apsjorat.com is available, which is of this much dollar. Okay, let me change it to Indian rupee so that we can get a better idea. ठीक है, तो apsjorat.com का प्राइस तुम्हारा इतना होने वाला है 661.78 पर ईयर, विच इज चिप, ठीक है। AI, यस, AI इज अ हॉट डोमेन एज ऑफ नाउ, ठीक है। apsjorat.oi AI का कॉस्टिंग इतना होने वाला है, ठीक है, 5,215 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपने डोमेन्स खरीद सकते हो, ओके। तो उसके अलावा भी अलग अलग डोमेन्स अवेलेबल हैं, एंड इफ यू नीड टू एक्सप्लोर डोमेन्स एज पर एज योर let's say category, so in that case you can simply type over here, you can select the category, and as per as your category you can select the domain name. Okay, so this was all about the domain names and the web servers, web hostings, how the web how the website gets hosted in a web server, and how the servers exactly respond, ठीक है। तो किस तरीके से जो है सर्वर्स रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट आने पे जो है वो एक रिस्पॉन्ड क्रिएट करता है, और रिस्पॉन्ड के बेसिस में तुम्हें जो है अपना वेब पेज, जिस वेब पेज के लिए तुम रिक्वेस्ट करे तो वो वेब पेज तुम्हें अपने ब्राउजर में देखने को मिलता है। अगर ये सारा कंसेप्ट अभी तक जो भी मैंने बताया, किस तरीके से तुम्हें सर्वर के डिटेल्स मिलते हैं, किस तरीके से एक सर्वर काम करता है, राइट, और किस तरीके से डोमेन परचेस किया जाता है, ये सारा अगर डिटेल्स क्लियर है तो फिर ट्रिपल वाई टाइप करोगे चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सर, हाँ, यस प्लीज ऋषभ जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन .com, .org, .in, ये सब जो होते हैं? Okay. See, in order to understand that, you need to understand the domain hierarchy. Okay, you need to understand the domain hierarchy. So there are top level domains, there are mid level domains, there are some multiple levels of domains. तो .com, .org की specific meanings होता है, like .com is used by those websites which are specifically meant to do commercial transaction, which are specifically meant to do commercial transaction. .org, by the name itself, you can understand organization, categories of businesses which are organization. It can be business organization, it can be non-profit organization, it can be for-profit organization, any kind of organization. .ai specifically used by artificial intelligence, right? Okay, .ai जो भी मैंने specifically दिखाया, .in, you know that .in basically stands for .india, ठीक है, ठीक, उस तरह से .bt for बांग्लादेश, ठीक है, .us for USA, तो वैसे ही इस तरीके से जो है काम करते हैं। I hope I'm able to convey the details, Rishabh ji. Yes sir, thank you sir. Okay, welcome. ठीक, so let us move on to the next topic. See, if I merely discuss all these concepts directly from the chapter, you won't be able to understand it in a practical perspective. Okay, you won't be able to understand in a practical perspective. So in order to create the interest, I will be showing you this practical demonstration, how you can exactly access some of the details, or how you can get the insight of a particular website. Okay, so this was all about the server, that is web server, but there is a difference between server and web server. As I said, server by the name itself, it is responsible to share some resources, or it is responsible to serve some sort of service. But yes, all servers are not web servers. There are many servers whose task is something else. Let's say if I have a server whose task is to provide storage as a service, in that case I won't be calling that server to be a web server.
Is that clear to everyone? Okay. Similarly, we have servers whose responsibility is to serve particularly the web pages, as I said, and those are the web servers. There can be many servers. Responsibility is to serve, let's say, serve the database, okay, to serve the storage, okay, to serve the storage, as well as to serve the infrastructure. Okay, in case if you need to develop a virtual computer, if you need to create if you need to enable the concept of cloud computing, where you have the facility to develop a virtual computer, okay, where you have the facility to do virtualization, where you can deploy a very powerful computer with, let's say, 32 gigabytes of RAM or 64 gigabytes of RAM, which is practically a little bit difficult, and let's say 2 TB 3 TB of SSDs with, let's say, multiple cores of processors. In that case, see, ये directly अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास limited पैसे हैं और तुम अभी develop करो, it is not possible. But with the help of the technologies like cloud computing, which is being provided by GCP, Google Cloud Platform, or AWS, Amazon Web Services, you will be able to do that, right? So all those servers are not providing the concept of, all those servers are not providing the service of website. Okay, so those servers are meant to provide services of something else. Okay, right? I hope you are getting the point. So those servers who are responsible to serve only the web pages are known as the web servers. ओके, सी ये सर्वर एक जो है कॉमन टर्म है, इसके अम्ब्रेला, इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे जो है टाइप ऑफ सर्वर्स आ जाते हैं. देयर कैन बी वेरियस टाइप ऑफ सर्वर्स लाइक FTP servers, mail server, SMTP servers, web servers, etc. Okay, but yes, web servers is a sub type of server. So this was the concept of web server and servers. Let us move ahead to the next concept, that is service provided by a server. So what are the services provided by a server? Okay, so the first type which you see over here is equipment or resource sharing. Yes, obviously if we have a server, we are expecting some sort of resource to be shared from that particular server. So if that server is not sharing some sort of resources, then in that case that server is of no use. Okay, second point we have is centralized file saving or data sharing. Yes, obviously if we have a server, we expecting कि जो entire data you have information है वो एक single point से जो है controllable हो. ठीक है, अगर ऐसा है, let's say APS जोराट की वेबसाइट में अगर मुझे कुछ चेंजेस है, let's say मुझे 10 15 20 जगह में चेंजेस करने होंगे, तो in that case that would be a very difficult task just to serve the web page. ठीक है, ऐसे एक तो सिंपल सा वेबसाइट है जहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है, अगर इसी का ही 10-15 अगर मैंने अलग अलग लोकेशन से मैंने जो है ऐसा एक प्लानिंग करवाया कि 10-15 लोकेशन में जो है मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर जाके जो है रिफ्लेक्ट करेगा सबको, so that would have been a pathetic scenario. Yes, therefore we have the solution of centralized file saving or for data sharing. ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग, सेंट्रलाइज्ड बैकअप्स. एग्जैक्टली. अब क्योंकि वेबसाइट एक ही जगह में स्टोर्ड है, तो इट इज वेरी इजी टू स्कैन फॉर एनी मैलिशियस कोड. एट द सेम टाइम इट इज वेरी इजी टू टेक द बैकअप. ठीक है, बैकअप्स. तो अगर मैं चाहता हूं तो विद इन अ क्लिक आई विल बी एबल टू टेक द बैकअप ऑफ दिस एंटायर सर्वर. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स. In case each and every point is clear, please type double Y in the chat box. Okay, ठीक है. So this was all about the various facilities that are provided by web servers. Now let us move ahead to the next concept, that is URL. So what exactly URL is? Do I have time to discuss this concepts, URL and elements of URL? Please acknowledge, or else I will be discussing up to URL. Please acknowledge if I have time to discuss the URL concept. So you have 8 minutes only. Okay, 8 minutes only. Okay, that's great. 8 minutes में हो जाएगा ये दोनों. URL, see, a URL by the name itself, it basically stands for Uniform Resource Locator. यानी कि कौन से लोकेशन में जो है particular वो फाइल located है, right? In which location that file is located, right? In order to get that, we need URL. चाहे तुम विंडोज ले लो, चाहे तुम कोई भी सिस्टम ले लो, सबका एक URL होता है, सबका एक पाथ होता है किसी भी फाइल का. Let's say if I take an example, if I need to check this file, what is the location of this file? In that case, what I will do is I will definitely click on this. I will tap on this button, get info. Okay, and here you can see I get the URL, I get the path. Okay, yes, I get the path. Here it is written Macintosh HD user Prabhat Das then downloads. So this is the hierarchy where the file is stored, right? So this is the URL of this particular file. Similarly, in Windows, you can get the URL over the URL bar, which is in File Explorer. So in File Explorer or in Windows Explorer, you will get the URL bar where the URL of the file is being stored. Okay, but yes, one thing we have to remember is that there are various kind of URLs. URLs are not of same type. Okay,
लाइक अगर मैं बात करूं तो हमेशा यूआरएल के पहले, जनरली अगर इंटरनेट के बारे में बात करूं तो यूआरएल के पहले यूआरएल का टाइप मेंशन करना बहुत जरूरी है. इज दैट ए सिक्योर्ड यूआरएल, is that a non-secure URL, what kind of URL is it SMTP URL, is it FTP URL, is it a news URL, is it a gopher URL? So there are various kind of URLs. Okay, so the most popular kind of URL is basically the HTTP URL or the HTTPS URL, because those are basically the text transfer protocol URL. Okay, so जितने भी वेबसाइट they uses the HTTP और HTTPS URLs. Okay, but अगर मान लो तुम्हारे पास कोई फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल वाले जो है services हैं, तो in that case it will be using the FTP URL. I will be discussing about this in a detailed fashion, and also I will be showing you some tricks how to access the FTP of a particular server, those open FTPs, so that you can exactly fetch the internal components of a website. Okay, तो किस तरीके से तुम fetch कर सकते हो, I will be discussing and I will be showing about that. Yes, and this news URL are being specifically used by those service providers whose responsibility is to provide news. ठीक है. And apart from that, there is one more URL, that is gopher type URL. I will be showing about that as well. ठीक है, गोफर यूआरएल क्या होता है, हालांकि वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो चुका है, तो एग्जैक्टली उसे एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे, बट यस डेफिनेटली आई विल बी शोइंग यू द टाइप. And apart from that, there are a few elements of a URL. The first is the type of a server or protocol. Yes, obviously at this point we'll be mentioning the type, what kind of URL is it. After that we will have the name or address of the server on the internet. दैट मीन्स कौन से लोकेशन में वो स्टोर्ड है इंटरनेट में, राइट. इंटरनेट में भी तो लोकेशन होता है ना, जैसे मैंने बताया था www is basically the repository or the information server which contains the information of all the websites. तो उसके पास इंफॉर्मेशन है कि कौन से लोकेशन में तुम्हारा, कौन से सर्वर के पास तुम्हारा जो वेबसाइट होस्टेड है, तो वो टाइप के बाद हमें मेंशन करना पड़ता है. एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ द यूआरएल इज दैट द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर. ये तो हो गया तुम्हारा नेम, एड्रेस का नाम हो गया. अब उसके बाद कौन से लोकेशन में, पर्टिकुलरली दिस लोकेशन में भी रिलेटेड टू ए पाथ थ्रू ए फाइल हायरार्की. अगर हम लोग बात करें इस एग्जांपल का, apsjora.org, this is the home page, but if I need to access a page, let's see if I need to access a page, let's say if I need to access this page, mission and vision. Okay, the moment I tap on, okay, this is a model, I need to access this page, school affiliation and essential details. So the moment I tap on this, you can see it is inside the about us folder. Inside the about us folder there is a file named school_essential. Okay, so here we have the file which from which we'll be getting the essential details. Okay, so this is the hierarchy, right. तो ये सारा जो है URL की categories है और URL के types है, sub types है. Okay, so that's it for URLs as well as elements of URL. In case if you have any kind of queries with URL as or elements of URL, you can ask. So students, in case if you have any queries regarding this URL, you can ask. As if every concept up to URL is clear, please try Y before leaving the class. In the next class, we'll be discussing about the protocols, as well as we'll be experimenting how exactly these protocols work.